Hi friends, I will take you to Jaipur but from a very different route this time. ट्वेंटी 2020 में मास्क के साथ में कुछ ऐसा हमारा ट्रिप था। सो दिस इज होटल संगम, पहले सम्राट था, अब ये बसंत ढाबा। इस रास्ते पे ढाबे बहुत आते हैं। लुक एट दिस बसंत ढाबा इज ह्यूज। ऑब्वियसली अभी हम लोग किसी ढाबे पे नहीं रुक रहे, हम अपना खाना खुद कैरी कर रहे हैं। बट आई मिस दिस ढाबा फील हियर। देयर इज अनदर वन कमिंग, दैट इज जन्नत ढाबा, मन्नत ढाबा ऑल्सो। राव जी होटल। हर जगह पे यहाँ पे पुलिस है, दे आर चेकिंग कि आपने मास्क लगाया है कि नहीं। बहुत अच्छा बंदोबस्त है सब चीज़ का। आई थिंक सेफ्टी तो पूरी मेंटेन हो रही है। दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल तो हो नहीं पाया, एटलीस्ट कुछ तो वही कर रहे हैं। थैंक्स टू मी। लेकिन due to pandemic during this time, Himachal and Uttarakhand were closed and we really wanted to visit hills, but we were almost happy visiting Aravalli Hills instead. We planned our trip to Jaipur. Instead of a normal route, we were taking route through Siriska so that we can see more of jungles and hills on our way. Our cousin joined us near Sariska, and this is how beautiful this entire route to Jaipur was. We just stopped here, थोड़ा सा देख रहे हैं जो अरावली की, ओह मोर की आवाज़। अरावली हिल्स है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी अरावली हिल्स हैं, दे आर वेरी ग्रीन। यहाँ पे कैंपिंग है, हो सकती है। बाजरे के खेत हैं ये, सो फार्मिंग जो हमने देखी थी ये सब है। जयपुर जा रहे हैं, दिस इज अ रोड ट्रिप टू जयपुर। लॉकडाउन में रहने के बाद ये फार्म्स और हिल्स बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। और इधर से गुजर रहे हैं भैया, चलिए चलिए। तो जयपुर जाते हुए सरिस्का रूट ले सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, यू कैन स्टे है। And as you can see, it is very green. राजस्थान भी इतना ग्रीन और ब्यूटीफुल होगा, we never thought about it before. It was very peaceful. We wanted to stay here overnight, but our destination was Jaipur, so we were going ahead. It is said that journey is more important than destination, and that's how it was. So we are stopping by. सोच रहे हैं कि तो बोला है बंदर को खिलाएं तो चिकन। बंदर को केला खिला देंगे। कैसे दर्जन है? कैसे दर्जन है? कैसे देते हो बताओ ना। सरिस्का के रूट पे टाइगर्स तो नहीं मिले, but there were so many monkeys, and look how much fun this entire thing was.
Traveling is always full of surprises and so much fun. These small things make the entire trip really interesting. Guys, time to go back to Jaipur as my mom and dad were calling me. They were waiting for me and we were just on our way. I have done so many road trips from Delhi to Jaipur and this route makes me always very nostalgic. This is the typical route as you enter Jaipur and you are greeted by this huge idol of Hanumanji. We reach Jaipur and it just makes us so happy. So this is Fairmont at Jaipur. Let me show you the Pink City. Old Jaipur या walled city की बात ही अलग है. It is very beautiful and every time it gets repainted into pink color. Look how nice it is. So we are in Jaipur and this is Hawa Mahal. Obviously I've seen it so many times but every time it's a new feeling. The sky is painted by God today. And those cafes I want to visit, the Tattoo Cafe. And if you sit on those cafes, you get a great view of this place. I have so many memories from this place and still every time I visit, I just get spellbound. I will take you to some amazing destination during my stay in Jaipur. जयपुर के साथ में बहुत सारे बचपन की यादें हैं और सबसे ज़्यादा आई थिंक इस एरिया सी स्कीम और स्टैचू सर्किल की है. We are going to Tapri restaurant. It is one of the recommended here. It's a cafe. We do not visit touristy places during our Jaipur trips anymore. We rather enjoy in various beautiful restaurants and cafes. Cheers to chai. कैसी चाय? दालचीनी Amazing, amazing. फ्लेवर उसके आगे. क्या क्या खाया आप लोगों ने? दाल पकवान, वड़ा पाव मेरा दाल पकवान आ रहा है, वड़ा पाव. और पाव लीजिए. Great. So to end this trip, we are in Bar Palladio. Jaipur has so much to see and explore. Every time I visit, I find something new. This time I was visiting Bar Palladio for the first time. It is an Italian restaurant and it was really beautiful.
This is in heart of city, and we also visited Shikar Bagh and Kanota Palace. Again, my first visit to Achrol House, Spice Court and Hari Mahal Palace this time. If you are a non-veg food lover, then we have found one of the best place for you to visit, and that is Spice Court. The food and ambience here is so royal, Rohit totally loved it. तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशंस? आई हैव सीन ऑल द टूरिस्टी प्लेसेस लॉन्ग बैक एंड स्टिल एवरी टाइम आई विजिट जयपुर आई फाइंड समथिंग न्यू. So next to Achrol House, where we went to Spice Court, is Hari Mahal, and this is how it is. Every time I visit Jaipur, I love exploring these unseen places, and it is always never ending. Thank you for joining me in this trip. Please subscribe to my channel and also share this video ahead. I hope you will enjoy these tips in your next Jaipur visit.